3, 2, 1. I am the Shah. What up? How you doing, man? Yeah, fit. What are you doing in Karachi? Yeah, ऐसे ही वैसे ही मैं सोचा अगर माइंड को क्लैरिटी चाहिए थी आई थॉट कराची से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है. I could think of a few places. I mean, you live in Lahore. Up north भी जा सकते थे आप. यार नहीं, वो हर कोई जाता है. इट्स टू मेन स्ट्रीम. You don't want to be mainstream? लाइक आप वो डेंजर में रहते हो ना. Yeah. वहाँ क्या पहाड़ से गिर जाओगे, ज़्यादा क्या हो जाएगा. हाँ यही होगा, ऐसा कुछ होगा. सही खाना बात. फीका होगा. खाना फीका तो is a This fact of life. Yeah. Whatever. What are you gonna do? How's stuff been going, man? You're an actor now. You're in fact you're in an Asim Abbasi series, which is a big fucking deal. Yes, with Fawad Khan and Sanam Saeed and Khushal Khan and Anika Zulfikar Let's and go. Iman Salman and Salman Shahid and Saad Hassan and these names. Meesam Naqvi also and Faiza Glani. And sorry, I'm forgetting names. Okay. And me. Of course. And And you. Aram, kid. And Tareem, the kid. Tahrim is also the kid. Achha, I just wanted to clarify one thing. It's not. It's not out. It's not Anika. What? It is Anika because I call her that. It's not Anika. You call her Anika. Because it is Anika. It rhymes with Janika. Exactly. For that reason. Garmi Pasina Anika. No, it doesn't. It doesn't go that well. Yeah. But you've been getting a lot of paid work also, bro. Tell me about it so I can start. So I can open my Red Bull. You know I have to switch all this manually. It's wreaking havoc. I'm just gonna sit quietly. No, don't do that. All right. But yeah, I started getting paid content stuff, things. क्या कह रहा हूँ मैं? Branded stuff. पहला Coke था. They reached out. I didn't think I wanted to do it, but it was like, it wasn't much work. I was like, oh, कर लेता हूँ. Usually when I get work is when I don't want work. अच्छा, मैं ये बताता हूँ. When this web series thing happened. Yeah. Because last time a podcast में आया था, I couldn't tell you anything. No, you couldn't. Nothing. तो हुआ ही था, Asim Abbasi saw my videos and his casting director reached out और उन्होंने कहा कि आप 2 महीने के लिए हुंजा आएंगे, इस वेब सीरीज के लिए आसिम अब्बासी शूट कर रहा है, ऑडिशन करना पड़ेगा. आई डिडंट थिंक आई गेट इट बिकॉज मैंने कभी एक्टिंग नहीं की थी एंड आई थॉट कि ओ एटलीस्ट वो इम्पोर्टेंट लोग देख रहे हैं मेरा कंटेंट, लाइक जिनको मैं चाहता था देखने. तो आई ऑडिशन, आई गॉट द पार्ट. फिर मैं कराची गया. आई डिडंट नो कि अंदर कौन है, कास्ट कौन है, मैं पूछा ही नहीं था. आई वाज लाइक खैर है, काम कोई काम तो मिल रहा है ना, बिकॉज आई हैड जस्ट quit my job, because they just wanted to get rid of me वैसे भी, because काम था ही नहीं उधर. उसके बाद मैंने 1-2 वीडियोस बनाई मुश्किल से एंड आई टोल्ड माई फ्रेंड्स कि मैं 1 मंथ के लिए ना जा रहा हूँ, लाइक घर रहूँगा, मैं निकलूँगा नहीं, आई जस्ट नीड अ ब्रेक. और वो कहते तूने काम क्या किया है, तुम्हें ब्रेक चाहिए. एंड while I was on that break I got the message and then I went to Hunza. Sorry, I went to Karachi first. That's when I met you the first time. That's when we did the podcast. और आसिम अब्बासी का घर था आई थिंक, जहाँ उन्होंने बुलाया मुझे, और मैं वहाँ जब पहुँचा देखा फवाद खान बैठा हुआ था. एंड आई थॉट कराची में भी नॉर्मल है ये कि एक डायरेक्टर के घर एक्टर्स आए होते हैं. He's not just an actor though, no? हाँ, he's फवाद खान. Yeah, he's a big deal. हाँ, फिर ये हुआ कि we did some rehearsals और फवाद खान से मेरा काफ़ी इंटरेक्शन भी हुआ, सबके साथ हुआ, सनम सईद के साथ भी हुआ. इट वाज रियली फन. फूड पॉइजनिंग 2 दफ़ा कराची में हुई मुझे. Bro, 2 तो स्टैंडर्ड है. अभी इस दफ़ा होने लगी थी. मैंने ना एक दिन मैं वहीद फ्राई कबाब खाए मैंने, और मैं बर्न्स रोड था, डिफरेंट चीज़ें खाई हैं. और फिर मैं गया हूँ अगले दिन टेस्ट किचन गया हूँ, फिर ओकरा गया हूँ उसी दिन. अगले दिन मेरा पेट बस बंद था, कुछ था. अच्छा, वो ऑन दी एज था कि कुछ हो सकता है अभी ORS ले ले. फिर मैं ORS ले ली. ORS fixes your stomach from... आई डोंट नो, किसी ने कहा था. ORS मैंने जब पिछले बार कराची में हुआ था ना, तो मुझे उन्होंने बहुत ORS पिलाई थी. I think ORS just supposed to replenish what your body's losing because of the diarrhea. I don't think ORS is But I didn't have diarrhea this time. I had the last time, yes. बहुत बुरा था. That's why. बहुत बुरा सीन था. It was also like really bad timing. Because लोगों को लग रहा था कि मैं बहाने बस बना रहा हूँ ना मिलने के. Actually just going up. You do that also. I mean no, मैं बहाने नहीं बनाता. I hope, मैं दुआ करता हूँ कि कैंसिल हो जाए.
But that's worse than bahane banana, no? नहीं Yeah, dude, I think that's a bit of narcissism. You're like, नहीं ऐसा नहीं हो कि सिर्फ मैं ना जाऊं, हो ही ना. नहीं इस लाइक ज़्यादा लोगों का होता है तब तो मैं बहाना बना आता हूँ, लेकिन अगर सिर्फ मेरे से मिलना है तो लाइक यार क्या बात होगी, लाइक इधर क्या बात होगी अभी. Right. Well, this is going to be the shortest podcast we've ever done, that I've ever done, ever. स्टोरी ऑफ माई लाइफ. नहीं लास्ट टाइम भी बहुत लंबी हो गई थी फॉर नो रीजन. Bro, lambi for no reason तो नहीं हुई थी. It was लंबी. normal. But no, stop. What are you doing, dude? Come on. अच्छा Come on. सॉरी. But I think रेड बुल का सिप नहीं लिया अभी तक. इट्स अभी रियली तक सिप भी नहीं लिया. यू हैड Mine's done. क्या मतलब पी भी लिया. हाँ, ये क्या था रेड बुल है यार. पानी है. पानी भी टाइम लेता हूँ मैं तो मज़े लेता हूँ बिकॉज़ पैसे लगते हैं. मेरे नहीं लगे ऑब्वियसली. नहीं, उससे क्या होता है, bro? I wasn't inferring that. But speaking of money, hard segue. हार्ड. How much? अच्छा लास्ट टाइम मैं इतना नींद में था कि वी मेड अ कॉन्डम जोक एंड मुझे पता नहीं था वी मेड अ कॉन्डम जोक. You made a condom joke? I didn't intend to make a condom joke. I said I'm like a rubber. Bro, लोगों के दिमाग खराब है. लोगों You के were not saying dirty. that at all. हाँ. I was saying I'm like हाँ, exactly. Your I'm like elasticity. Yeah, exactly. yeah. You bounce back. मैं नाड़ा हूँ. हाँ. और नाड़ा. Bro, Eminem की line है, rubber band man. Yeah, I just bounce back. That's what you were saying. That's what you were saying, dude. Come on. People, man, people want to think the worst. Wait. Eminem said that. Yeah. कौन सा song था? याद नहीं आ रहा. But anyway. Yeah. So I was in Hunza. Mhm. जो कि 2 महीने ज़्यादा हो गया था और मैं पागल हो गया था थोड़ा सा Hunza में. So instead of the 2 months, it went to 4 months. No, it went to 2 months. और फिर हमारा शूट ये हुआ था कि Hunza से मेरा एक सीन बलूचिस्तान में शिफ्ट हो गया था. Wow. एंड आई केम फॉर दैट जिसकी वजह से सोया नहीं था बिकॉज़ मैं लाहौर से कराची आया. वहाँ से मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद मेरा स्टे था. उधर से बलूचिस्तान गया. बलूचिस्तान से फिर वापस आया. दैट्स व्हेन डायरेक्टली आई केम टू यू. Hmm. और मैं बिल्कुल लाइक बुरा हाल था. बट मैं भूल गया हूँ कि मैंने क्या एक्टिंग की थी और क्या हुआ था. इट्स लाइक अ वियर्ड ड्रीम बिकॉज़ इतना नॉर्मल हो गया था कि फवाद खान भी उधर है, सनम सईद उधर है. वी आर जस्ट हैंगिंग आउट. Because they are people at the end of the day, you know. You just talk to Sanam Saeed yourself. is more people. Then Fawad? Yeah, I would say, and that's a compliment. Okay. That's a compliment. She likes to hang out more. I Huh. think. Huh. But then I was speaking to Akbar Chaudhary on the podcast, and I was thinking about exactly this. We were speaking about exactly this. We're not. I even in fact spoke to Ramesa about this also, because such followings these people have, no? You're not meant to. Your body, physiologically speaking, you're not meant to care about more than 50 or 60 people, and what they think about you. Period. Right? Yeah, that's a lot. That's a lot. 60 is a lot. Mhm. These people have millions, bro. You cannot imagine what that does to you. You know what I mean? So I think it needs to be appreciated if any of them can operate normally at all. Every time I meet one of them, even Irfan Bhai or any of them, I'm just like, how are you normal? Right? Like, because Exactly. I can also see that there's a lot of pressure ना. खुशहाल का मैं ये देख रहा होता हूँ कि he's still very young and he has to like be like अच्छा publicly I can't be fully himself Mhm. because he has to be like अच्छा लोग देखें कोई वीडियो छुप के बना रहा होगा कोई इस तरह की रैंडम चीज़ें Yeah, हो रही dude. होती हैं. Yeah, People yeah, do yeah. that. Yeah, dude. People और do. बहुत वो स्टेयर कर रहे होते हैं लोग. आप खाते आपको वैसे ही अजीब सा लगता है यार कि कोई स्टेयर कर रहा हो. Mm-hmm. That's a little disappointing, in fact. I think ऐसे नहीं करना चाहिए इनके साथ. मतलब ठीक है, they're celebrities and you love them and you appreciate their work. All of that, I think I have appreciation for as well. I mean, I'm a fan of a lot of people. I can't even imagine what I would be like if Like I me. saw Michael. Of you, of course. Yes, yes. I'm kidding. I'm your fan. अच्छा चलो ठीक है. मतलब but You're just not my fan. You're my brother. okay. All right. I'm just kidding. Okay. All right. You're my friend. Okay, continue. I understand. Okay. But so I was saying, like, if I were to, I don't know, if I were to see someone like Michael Jordan, maybe I would, but then I hope that I wouldn't at least make them, or I would be cognizant of the fact that don't make him uncomfortable. He's also 6'6". It just, it just completely wreck me. But, He'll be like, नहीं उसके
नहीं नहीं हाँ, my head's gonna be no. I'm 5'11". ऐसे नहीं होगा लेकिन नहीं वो हील्स पहन के आएगा आपके पास. क्यों मेरे पास heels पहन He's के? Michael Jordan. He can do anything he He can do wants. whatever he wants. That is Michael true. B. Jordan, on the other hand, because वो He, Michael A. Jordan नहीं है. नहीं Michael B. Jordan को हम थोड़ा नीचे होके मैं बात कर सकता हूँ. हाँ इस तरह थोड़ा सा इस तरह. Michael B. Jordan is 5'10" or something. उस Uh, are you sad because you're shorter than him? I don't know, maybe. I've Okay. never met him. He's American. Americans वैसे ही लंबे हो जाते हैं. But he's black. So तो हाँ, advantage वहाँ भी है. what are you talking about? No, But he's just anyway, a really good actor. Sorry, Michael B. Jordan. यार If you're watching this podcast, I wasn't dissing you. he caused problems for Sylvester Stallone, dude, with Creed 3 or something. नहीं, he's not the reason for that. Who's- सिल्वेस्टर के अपने मसले हैं. उसने खुद वो दे दिया था, राइट्स दे दिए थे प्रोड्यूसर को उस टाइम, और अब वो रो रहा है. ऐसा था? हाँ, ऐसे हुआ है. That's unfair. और सिल्वेस्टर is the type of guy जो इस तरह कर सकता है, बाद में रोए. सारे कहते हैं उसके बारे में. प्लीज स्टॉप बहुत डूइंग महंगा है. दैट. आपने महंगे की बात है, आपको वैसे भी नहीं करना चाहिए ये. प्लीज नहीं करो. The more you stop me, the more I want to Okay. put this mic in my Okay, mouth. all right. I don't want to. Okay, I understand. No homo. I understand. What were you saying about meeting them and hanging out with them? I did also want to ask you in that same context, how was it being on a set with because these people, if you want to say that, maybe not Fawad Khan and Sanam because they're doing all sorts of work, but Asim Abbasi definitely has a vision that pushes boundaries. Yeah, You yeah. know, how was it? And you know, just watch your short form content and then be like, hey, isko bula lo, right? I saw my nose and he was like, "This is what I wanted." That's not even. I'm not even lying. He said my nose was my best feature. The thing I want to get rid of. Bro, your nose is fine. But how was that experience? How was working with him? Because this is the first time you Proper acting. हाँ, but you do create videos. आप बहुत सारा काम करते हो and so you know उसी का एक heightened version होगा. It's easier to understand than कि अच्छा ये करना है. This is what I have to do. Because Asim Abbasi is more about one takes. They're longer takes. I think मेरा एक ही scene है इसमें. Like अलग shots थे दूसरे actor के. वो too short था, I guess. That's interesting. That's super interesting. Does that put more pressure on you No, as an that was actor? more fun. I think that was more enjoyable. I could be in. I was in character. I think the other actor was also in character because वो एक लंबा scene है. It's like a 6-minute scene जो हम एक दफा एक go में ही कर रहे हैं. Hmm. So I thought that was more helpful. हाँ, because then I wasn't really thinking about my lines. I was thinking about मेरी position क्या होनी चाहिए. मैंने चलना किस तरह scene में क्या करना है मैंने. So there was a lot to do. And I think the camera can always tell when you're thinking about your lines. आपकी आंखें थोड़ी shift हो जाती हैं. That's super interesting. But so does that give you though more room as an actor to work? I mean, if I was a more experienced actor, because I'm not an actor yet, अभी तक तो वो आई नहीं web series. Right, but you're acting normal right now? I'm back to my bullshit. It's like मैं अब दोबारा acting में आऊँ ना, I don't know. It's muscle memory, dude. It's muscle memory. I don't know if it's muscle memory because it was easier to learn the lines. I knew my lines. That was the only because I said that to them कि आप मुझे hire तो कर रहे हैं. मैंने acting कभी नहीं की. Lines मैं याद कर लूँगा. Acting कराना आपका काम है. That's cute. But I also sort of understood my character. Are you at liberty to speak about your character? Not yet. Not yet, but I was like, okay, these are his problems. He is like, I just assumed there's not a person who's happy, who's not entirely happy. उसकी मजबूरी है इधर होना. तो and also मेरे असल जिंदगी में कुछ लोग थे who I could see, okay, इसकी लाइफ में ऐसे हुआ था, ये हुआ था, and then I could create this person, this 4D person. So it was easier then. Yeah, अच्छा, I know who this person is, so then I can act. I should believe that this person is real, at least. बाकी चाहे acting फारिग हो, L acting हो चाहे मैंने तो कोशिश की थी ना.
But yeah, now that I think about it, अब तो मैं बेहतर obviously when you look back, you're like यार मैं ये भी कर सकता था, ये इस तरह ही कर सकता था. Hmm. But was this always the design though? I mean, you're primarily a video maker and com- you do comedy, comedic content Yeah, and rapper. That's that music and I'm that the realest rapper in this game, by the way. सारी पूरी दुनिया यूनिवर्स के रैपर्स में सबसे रियल हूँ मैं. it's just you and who Talanjum नहीं नहीं Faris वो nahi. कोई भी करीब ही नहीं है. अच्छा sorry I yeah टूपाक को कैसे थे मैंने मरवा दिया था उसे I अल्ताफ understand. भाई से कह के. Anyway. अल्ताफ भाई को आपने कहा था कि टूपाक को मरवा दो और अल्ताफी मार दे इसे. you called him Altafi. I हम understand. ब्रोस थे अब नहीं है. अब नहीं He's हाँ. not that good looking anymore. पहले था एक टाइम. Only good looking people can be your friends. In my gang. I mean, why are we friends, Kazi Akbar? I have no idea. Frankly, Are we friends, Kazi Akbar? probably not, man. We're homies. Yo, we're homies? We're gang members. Are we gang members? We have tattoos. एक दूसरे नाम है. एक cheek. We weren't supposed to speak about that in public. Oh, sorry. Haram. Yeah. नहीं नहीं होता है चलता. कराची है bro. मैं तो लाहौर का हूँ. हम मुसलमान ज़्यादा हैं. आप ज़्यादा मुसलमान हैं हमसे. I understand. Of course. नहीं. हम बादशाह मस्जिद है उधर हमारे पास. And बादशाही मस्जिद का मतलब ये है कि हम बादशाह हैं उधर. right. मस्जिद के अंदर आप बादशाह हैं. नहीं हाँ. Okay. ये मुझे कोई मार देगा. नहीं अल्लाह रहम करे कोई मार नहीं रहा आपको. नहीं लेकिन बात सच है. सच बोलने में मारते हैं लोग. सही. झूठ बोलने में कौन मारता है? आज तक सुना किसी ने झूठ बोला किसी ने मार दिया उसे? Nothing comes to mind of that sort. No. Yeah. You're right. Anyway, हम बहुत off track हो गए. नहीं bro यही track है हमारा. Have you seen that guy? I forget his last name. Ali Sufyan, who does the podcast. Ali Sufyan Wasif. हाँ, the podcast वाला. ये हमारी actual podcast is turning into one of his skits. This is ridiculous. He has competition now. Red Bull. Yes. No. I'm surprised Red Bull अभी तक मेरे पास नहीं आया. I can actually have like grow wings. You can actually grow wings. Yeah. From my butt. All right. अच्छा नहीं, let's move on. Move on to what? What are we moving on to now? Butt से ऊपर. Butt कढ़ाई. Butt kadai. Right. Does Karachi have butt कढ़ाई? I don't think so. I'm not a fan of the eateries बाहर की यहाँ पे because मेरा तो पेट वैसे ही खराब रहता है. You're more of food panda person. I am more of a food panda person. Yeah, मैं तो कह रहा हूँ अभी चलते हैं अल रहमान बिरयानी. इरफान जी की रील्स की वजह से मैं आया हूँ कराची bro. That's a lot of people actually. You're not alone there. Hey. No, I'm the only one. Oh, you're the only one? Yeah. और मैं जहाज खाली था जब मैं आया हूँ. अच्छा. I understand. And you're okay. You're the only one जिसने इरफान भाई की रील्स देखी हैं and मैंने मिलियन ये व्यूज मेरी वजह से. मैं ही देख रहा था. मैं फैन हूँ. I get it. हाँ ठीक है हो सकता है. सब फैंस हैं. सब फैंस सब मैं ही हूँ. सब आप हैं. I am legion. For we are many. I understand. Do you? Yeah, expand. What were you talking about? We're talking about you acting, dude, and how you मैंने एक think. दफा acting की तो I don't think I can really speak about. हाँ, the thing is, fun fact, not even a fun fact. I used to watch a lot of roundtables with actors and actors' interviews. Before that, I didn't realize that I was interested in acting. Okay. Which I think you're just embarrassed to say these things. Why is it embarrassing to say that you might be interested in acting? I don't know, because I have a squeaky voice. But you sing. You See, that was also like when I started, it was because मैंने सोचा कि मैंने music videos बना सकता हूँ लोगों के लिए. I can shoot and edit and direct. तो this should be my portfolio. तो एक दो मैंने videos बनाए. Reason यही थी. But I also understood content tab. I don't know if I understand it now. I mean, it's changing though, dude. Like 20-second. It's vertical videos now. Are you okay? I'm fine. But that was the intention. But deep down, I also wanted to be in front. I wanted to be in front of the camera, obviously. वरना मैं किसी और से कराता, लेकिन कोई और करने वाला भी नहीं था. Like I had सारी reasons थी.
but I like being in front of the camera, but also like being in control. Like, but Okay. see, this feels very weird कि मैंने अपना काम कर दिया है और बाकी एडिट वगैरह कोई और करेगा. I don't know if अगर वो शॉर्ट्स मेरे कौन से यूज़ होंगे, क्या होगा, कहाँ You have to कहाँ. you have to Yeah, detach yourself from the process. That's interesting. and it's been like 2 years अभी भी. Apparently it's a big deal, this project. Yeah. Apparently it's a bigger deal. मैं इसे एक इंडी प्रोजेक्ट समझता था, फिर मैंने फवाद खान देखा. Exactly. Like, What do you it's not expect? an indie project, मेरे पैसे ज़्यादा मांगने चाहिए थे. Sure. Sure, yeah. But I was also like, यार पहला प्रोजेक्ट है, मुझे कोई इतने दे रहा है, I can't complain. There were times in Hunza I used to be like, यार I have friends who want to be actors, Mm. जिनको ये opportunity मिल सकती थी, लेकिन मुझे मिल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह. I used to be like, अच्छा, I shouldn't complain, because मैं रोता रहता था कि यार अभी तक मैं हुंजा बैठा हूँ, 2 महीने हो गए, लाहौर पता नहीं कितना आगे पहुँच गया होगा, क्या हो गया होगा, मेरे फ्रेंड्स की ज़िंदगियाँ चेंज हो गई होंगी. I used to feel that, Hmm. which is ridiculous. और आपके बगैर लाहौर आगे कैसे चलेगा? यार ये तो अभी भी वही तो. टेंशन है. मैं इधर कराची आया तो सड़कों पे काम शुरू हो गए. वही. वही. बिल्कुल ऐसे ही होता है. ऐसे सही ही. बात है. सही बात है. So But बस it's it's a difficult thing to price yourself like that, no? Like that's why because you need management. that's exactly why you need management, right? Yeah. Because it's आपके लिए वो चीज़ सबसे बेहतर एक तरीके से होगी. And even if you're extremely self-critical, फिर वो आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ होगी. Either way, you're not going to be able to charge because एक sweet spot होता है ना, Yeah. brands are willing to pay and or directors are willing to pay and or producers are willing to pay Producers. and they'll pay you and payment कब आती है वो एक और बात है. I can even tell you the conversation. The producer called me. He's like, bro, आपको इतने पैसे हम दे सकते हैं. I was like, हाँ ठीक है. That's not a conversation, dude. I was like, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता. आपको पर डे इतने मिलेंगे, उतने दिन होंगे. I was like, okay, सही है. But Okay, but that was also a mistake. Sometimes you have to be like, oh, अच्छा इतने दिन है, मैं तो busy हूँ. You have to pretend to be busy also. That's something very important actually. yeah, Just pretend to be busy. Yeah. को मैं busy हूँ. Yeah. नहीं भी Yeah. busy. आप वैसे वेले हो. आप वेले भी कभी नहीं हो. आप सोच रहे हो ना आप busy हो. आप लेटे हो आप busy हो. But I think unfortunately you have to build up that kind of scarcity. नहीं तो people do take you lightly. That though is हाँ. it's not really anything that's अभी I'm being managed now ना. Yeah, yeah. By checkbox, and अभी कोई मुझे मैसेज करता है because अभी अचानक से these agencies started to reach out. जब मैं कराची आ रहा था for some reason they didn't know I was coming to Karachi, but this guy messages me, और एजेंसी ने पहले मुझे मैसेज किया था किसी और बंदे ने, अब किसी और ने किया. एंड मैंने वही स्टैंडर्ड आंसर दिया, है थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, ये मैनेजमेंट का नंबर है, आप ये डिटेल्स में आपको बता देंगे, मुझे नहीं पता. इज़ लाइक कि नहीं मैं अभी लिस्ट बना रहा हूँ तो आप अभी बता दें क्या रेट है. मैंने कहा वो ज़्यादा डिटेल बताते हैं. आई डोंट नो आपको किस तरह की वीडियो चाहिए. लाइक अगर म्यूज़िक प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, क्या एडिट मैंने करनी है, शूट भी मैंने करनी है, लाइक क्या सीन है मुझे नहीं पता. एंड इज़ लाइक ब्रांड बता नहीं सकता, आप बता दें. और आई जस्ट इग्नोर्ड हिम, और फिर वो मैसेज की जाए लाइक क्वेश्चन मार्क्स एंड ऑल. देन आई जस्ट मैंने बस लिख दिया 500K वैसे ही ना जांच कराने के लिए. मुझे वैसे ही, और उसका जवाब आया 50K. मैंने दोबारा 500,000 लिख के दिया कि भावे मेरे मैनेजर से बात कर, ये क्या बात हुई? 1 ज़ीरो गलती से लग गया मुझसे. मतलब मुझे इतना गुस्सा है इस बंदे पे. उसकी पिक्चर भी एक वो जिम ब्रो था. what's wrong with that? दे जस्ट वो स्टीरियोटाइप था ना बिल्कुल. अच्छा अच्छा चलो ठीक. गेट इट कि Yeah, sure. नहीं ये बस अपने बसेस दिखा रहा है मुझे. आई होप वो देख रहा है, उसे पता रहे कि कितनी स्टूपिड बात He थी. probably not going to watch this, but मैं ये उसे भेजूंगा क्लिप. चलें आप भेज देना. लेकिन आई थिंक अनफॉर्चुनेट ये बात है वैसे कि these people they don't really no I don't want to say these people as a These people generalization. either. नहीं नहीं ऐसे नहीं. But no no. But I think they do lump all of us and like they look at you, they look at me, be like same बात है. Bro कैसे same बात है? Exactly. I mean the work that you do is so different. मेहनत को भी एक तरफ अगर करें, I mean just you have so much more work to do than me, right? ऐसे आप सोच लो. But and हाँ नहीं नहीं नहीं. Sometimes. But brands
brands sometimes even are willing to pay, but ये जो बीच वाले middle They manager type होते हैं are ना, they are yeah, willing to pay. yeah, और दूसरा ये भी आई फील लाइक the brands I have worked with अभी luckily they also know they understand my content, तो उनको मसला नहीं होता when I'm saying कि अच्छा वो बात भी अप्रोच भी करेंगे ना, उनको पता है वो किससे बात कर रहे हैं, hmm, तो इट्स लाइक देन इट्स ईजियर। अब जिस तरह एक और शुरू में एक ब्रांड ने मुझे रीच आउट किया था एंड दिस पर्सन टॉकिंग टू मी, वो एजेंसी की कोई थी एंड शी हैड नो आइडिया मैं क्या करता हूँ, hmm, और मुझे पता लग रहा था उसकी बात से। जो पहला मुझे कोक वाला मिला था, द गाय आई वाज टॉकिंग टू जो एजेंसी का था, उसे पता था मेरा कंटेंट क्या है, वो खुद एक फ़ैन था अकॉर्डिंग टू हिम, मुझे नहीं पता वो फ़ैन hmm, था कि नहीं, hmm, बट आई कुड टेल काम करना ईजी था उसके साथ, और अभी तक ईजी है, तो आई डोंट नो आगे क्या होता है। नहीं नहीं, अल्लाह ने कहेगा इंशाल्लाह, but I think वही ना कि dude, I don't know, man, how people get on like this. Just the bare bones minimum you could do is actually find out who you're going to get in touch with, na? या You just call आप them उसका up and then what? कंटेंट देख लो, लाइक लिटरली एक दो बार कहा था आपकी आप किस तरह की वीडियोस बनाते हैं, हम लाइक आप डांट रहे हैं मुझे? आप देख लें। मतलब ठीक है, मैं अपने घर वालों को नहीं दिखाता था वीडियोस, बट कम ऑन वो भी नहीं पूछते मुझसे। I don't know, dude. That is a little infuriating. And वही वाली बात है कि what if the brand actually was willing to pay you a certain amount? Now, just because of your poor behavior and poor etiquette, by the way, you're shortchanging me out of quite a bit of money. And this is what I do for work. You know, या ये मेरा काम है. आपको तो paycheck collect करना है end of the day. थोड़ा और आपको प्रॉब्ली इतना वेट भी नहीं करना पड़ेगा, इतना मुझे वेट करना पड़ेगा पेमेंट के लिए। वो तो एक और वो is a entirely different thing. देख, What? you know you have to wait like 3 months, or sometimes it's like in a week. Yeah, those are the Some nice ones. Yeah. हाँ, so like some like brands pay you in advance, वो एक amount दे देंगे certain, then you have to wait Hmm. for the other amount. Hmm. It's fine. Hmm. But then there are times when they don't pay you for a year, Yeah, that's not good, dude. and then you have to get your lawyer involved. That happened. Yes, that did happen. और पहले I was like अच्छा easy है. I was talking to this person. Hmm. I was like वो कहता था कि यार ये मसले चल रहे हैं. I was like हाँ ठीक है यार, ठीक है. And I'm अल्हम्दुलिल्लाह कि Alhamdulillah. Yeah. कि अगर पैसे ना लाइक कराची आने से पहले लाइक आई थिंक अ मंथ को मेरे अकाउंट में ₹105 थे. Hmm. Just letting you know. शुक्र है कि अब नहीं है. बट और ये नहीं कि 1 मंथ के लिए वो इस तरह का सीन था। Hmm. लाइक फॉर लाइक 2 मंथ्स एटलीस्ट मैं बस बैठा हुआ था वेला, Hmm. और मैं लाइक मेरी आदत है, मुझे लगता है कि मैं अगर अपनी पेमेंट माँगूँगा मैं बहुत अनोइंग साउंड करूँगा। For what is yours, your hard-earned money is what you're या going to be annoying about. लगता है ना कि आप अपना हक माँग रहे हो, या कितने बड़े लूज़र हो, अपना हक माँग रहे हो। But don't you feel that the other person counts on that? कि हाँ इसको बुरा लगेगा. Sometimes they do. Sometimes they are actually good people, and Yeah. but yeah, this time this person जो like payment जो साल तक रुकी रही थी, that person was counting on that. Hmm. और and I was like नहीं यार, cause आपको एक certain रिश्ता बना होता है, and you're like यार नहीं, it'll get ugly. But my friends they kept asking me almost every day, payment आई आज, payment आई, and then my friends were like इतना टाइम हो गया, अब हम we're getting involved, Hmm. you don't get to say because you don't know what's best for you. Apparently not, dude. If you're letting it, yeah. एंड देन दे वर लाइक लीगल, वो उनको पहले लीगल नोटिस नहीं लेटर भेजा, देन दे वर लाइक कि अभी मसले चल रहे हैं, उनको फिर भी टाइम दिया, टाइम देते रहे, मंथ्स देते रहे, और फिर दरमियान में उनको मेरे से एक और काम था, मैंने वो भी कर दिया, पैसे फिर भी नहीं अभी मिले थे, वो और डिले हो गए। एंड देन उसने फ्रेंड ने, जो माई लॉयर फ्रेंड, उसने लीगल नोटिस भेज दिया, उसने कहा ये सीन है, इतना आपको फ़ाइन भी देना होगा, और अगर नहीं होता हम कोर्ट में जा रहे हैं। और कोर्ट में जाते तो मेरे पास ज़्यादा एविडेंस था, और कोर्ट्स ने मेरी साइड लेनी थी ऑब्वियसली, और मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाने थे। और आई वाज़ फीलिंग बैड थ्रू आउट दिस, आई वाज़ फीलिंग बैड कि यार ये नहीं होना चाहिए, पैसे ही हैं, इवन दो कंगला था, फिर भी यार पैसे ही हैं, उसके लिए लड़ना नहीं चाहिए Hmm. एटलीस्ट, मेरी ये सोच थी।
एंड आई वाज फीलिंग बैड टिल द डे आई गॉट द मनी। और फिर उस बंदे ने मुझे कॉल की कहने के लिए कि मेरी फटी नहीं थी। लिटरली कॉल मी टू टेल मी कि उसकी फटी नहीं थी, फिर भी उसने मुझे फाइन दिया है, उसने मुझे पे किया टाइम। और मतलब पहले कुछ लोगों से पहले मुझे पे मिल गई, Hmm. और मुझे पे मिल गई, और उन लोगों को मिल गई थी पे बहुत पहले जो पीछे पड़ गए थे शुरू में ही। Hmm. बाय द वे, तो Hmm. पीछे पड़ना बुरी बात नहीं है। Not only that, dude. I think shuru se na, I think people like you and I maybe because I have experienced something not to that degree, but something similar or a few things that are similar. I think because we're avoiding conflict. But you need to understand this is not conflict. This is not It, conflict until it he makes it he conflict. made a conflict now, and he's now talking shit. ये फ़ोन कॉल चल रही है और मैं नींद में हुआ था। एंड ही लाइक दिस पर्सन डज़न्ट नो दैट माय फादर इज़ अ लॉयर। अगर इफ आई रियली वांटेड टू स्केयर हिम आई वुड हैव जस्ट गॉन टू मैं अपने फादर को बताया ही नहीं था कि ये मसला चल रहा है। Hmm. Hmm. और ही इज़ लाइक कि ही इज़ लाइक कोर्ट्स में बचपन से जाता रहा हूँ। एंड हमने अगर Yeah. ये नहीं करना चाहिए कि अगर मैं तेरे पैसे लेने होते मैं ले सकता था, लाइक मैं तुझे कभी ना मिलते। एंड से स्टफ लाइक दैट, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने आगे ही काम करना है। एंड से स्टफ आई जस्ट हंग अप ऑन हिम। Yeah. And no, what else are you gonna do? Listen, man. What else are you gonna do? And People like it him. gets worse. Okay. I was, till that point I was feeling bad, and then I was like अच्छा नहीं, इस तरह बदतमीजी किया तो सही है, मेरे फ्रेंड ने सही किया। Yeah. मेरे फ्रेंड ने सही किया, ठीक है, मंथ्स कुछ गुजर गए। आई एम टॉकिंग टू दिस अदर पर्सन, एंड दिस पर्सन आस्क्ड मी, यार वो एक चीज़ जो की थी उसकी आपको पेमेंट मिल गई थी? मैंने कहा आपको मिल गई थी? एंड दिस पर्सन इज़ लाइक नहीं, मुझे तो अब तक नहीं मिली। एंड दैट्स व्हेन आई वाज़ लाइक यार मेरे फ्रेंड्स को तो और बुरा करना चाहिए था इस बंदे के साथ। Hmm. बिकॉज़ दिस इज़ रॉन्ग देन कि वो लोग बहुत नाइस हैं, वो लोग बिल्कुल नहीं पूछ रहे तो आप दे ही नहीं रहे उनको उनके पैसे। Hmm. अगर आप जब तक ये नहीं करोगे, जब तक आप बदतमीज़ी पे नहीं आओगे, तो आप पेमेंट ही नहीं दोगे। Well, I would argue, I think a solid argument to be made here is this is exactly why this industry won't grow the way it's meant to grow because there's people that are left, right, and center trying to take advantage of people for being nice or naive. Even if you were naive, आपके हक हलाल के पैसे हैं ना वो खा के क्या करेगा समवन सेड कि ये सेविंग अकाउंट में रखे होते हैं और वो बस इसलिए डिले करते हैं ताकि पैसे बढ़ा दे। आई डोंट नो। really sure yeah that's a feasible kind of explanation. बट या आई केप्ट थिंकिंग कि अगर मेरे फ्रेंड्स अच्छे ना होते Sure yeah. तो मैं कभी लाइक मैं तो उस तरह हूँ ही नहीं कि और मेरी मैनेजमेंट को मैंने बताया था ये सीन चल रहा है एंड दे वर लाइक लॉयर को इन्वॉल्व से नहीं किया। मैं तो हो गया, अब तो सब हाँ कुछ हो गया। दे हाँ वर लाइक चलो खैर। Well, I think unfortunately, and no knock on your management either. I think even ज़्यादातर जो management companies होती हैं ना, they're very interested in working with top tier people. But you and I technically, you're mashallah say quite good, lekin we're not top tier, right? So they also don't want to go. They also don't want to go out on a limb for us. I think generally system जो है थोड़ा इस तरीके से है कि they're like, oh हाँ कर लो आप. Bro, okay, listen to me. What is your job description as a manager? They don't have a job description. Where does it say what all you signed up for? It's all loose, abstract language. That's the other problem, na? And they'll come back to you and tell you things like, oh no, you should have done this. No. If I have to do it, then I'll do it. आप क्या कर रहे हो? How are you handling the situation? बट टू बी फेयर लाइक दे डिडंट नो मच कि क्या चल रहा था उस वक्त। आई डिडंट No, टेल देम ईदर। ऑफ कोर्स क्या देखो पहली बात तो ये ना आई थिंक ये एक मर्दानगी का भी मसला है कि नहीं मैं अपने मसले खुद हल कर लूंगा मैं किसी को बताने की और जरूरत नहीं है मर्दानगी का मसला भी नहीं। आई थिंक इट्स आल्सो समटाइम यू जस्ट पुश ओवर कि अच्छा यार हो रहा है मेरे साथ ही हो रहा है ना। हाँ, बिकॉज व्हेन दिस अदर पर्सन टोल्ड मी कि लाइक उससे और कुछ और लोगों को पेमेंट नहीं मिली, दैट्स व्हेन आई वाज एंग्री कि यार उनको क्यों नहीं मिली। अपनी तरफ मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था। अजीब सेवियर कॉम्प्लेक्स है आपको सेविंग कॉम्प्लेक्स नहीं यार, आई जस्ट थिंक कि अब दूसरों के साथ ज्यादती है अपने साथ तो होती रहती है। क्यों होती रहती सुपीरियर है ब्रो कॉलेज का लौंडा हूँ। अच्छा आई डोंट नो व्हाट दैट मींस सुपीरियर बस फर्स्ट ऑफ व्हाट अ नेम सुपीरियर कॉलेज कितना लाइक स्मॉल डिक एनर्जी है ना। आई गेस आई मीन नो दे जस्ट नीड टू नो यस। ऑलराइट सुपीरियर कॉलेज so you Fuck call that place. oh you don't like it
नहीं, आई डोंट लाइक अब्यूज़। सॉरी, मुझे केस कर देंगे स्पीड वाले, बट हाँ, मारते थे यार कॉलेज में, लौंडों को कौन मारता है? But मैंने बीकॉम में लाइक टॉर्चर देखा हुआ है। wait, you're the same age as me, तो ये तो बहुत रीसेंट बात हो गई ना फिर। अभी भी मारते हैं? अब मे बी अब बेहतर हो गया कि अब सबके पास फ़ोन ज़्यादा हैं। तब भी होते थे लेकिन तब उस तरह नहीं था। हुँ। अब सोशल College is मीडिया ज़्यादा college है। is like when you were 18, 18, 19 ऐसे? हाँ, हाँ, कॉलेज तो इंटर था, बीकॉम इज़ जब आप ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, हाँ, उसके बाद मैं एमबीए किया था। एमबीए तो यूनिवर्सिटी प्रॉपर थी, तो दे डिडन्ट लाइक बीट यू अप। Yeah. वो मुँह से इंसल्ट, हाँ। चर्सी वगैरह कह देते थे, और इवन दो आई डिडन्ट डू Yeah. एनीथिंग। आई वाज़ लाइक, Anything at all? What's और going मुझे on? ये अजीब बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स होते थे You कि never. आपको नहीं, वो होते थे कि ऊँचा बोला करो, कम किया करो, आंसर आते होते हैं, बोल नहीं पाते, चर्सी हो। बट या, No, एक मिनट। इंटरेस्टिंग। So when all of this stuff was going on, you were, this is 2012 then? 2010, 2011 ऐसे? द कॉलेज? Yeah. या दैट्स व्हेन आई ब्रोक माय नोज़ आल्सो। But you didn't break your nose because of the abuse. ओह नो, नो, कैसी Okay. की तैसी, तब तो मैं जलाया था कॉलेज। But yeah, I can't imagine कि 2011 साल 12, में 13, 14। हाँ, 2012 में चाहे तो 2014 में कोई इस तरीके से कर रहा था, पर अगर तब हो रहा था तो फिर अभी भी हो रहा होगा। We're just removed from it ना, proximity bias है। हाँ, मैं तो वैसे ही ब्लॉक आउट कर दिया, इट्स लाइक अ बैड ड्रीम। Jeez. What's the worst thing you ever saw? वर्स्ट थिंग आई एवर सॉ, हुँ, यार हाँ, मैं एक ट्यूशन पढ़ने जाता था एक एकेडमी में। हुँ, आई रिमेंबर दिस वन टाइम, दिस टीचर, दिस वैसे वेरी अब्यूसिव टीचर जो मारता था पटाख मुंह पे, हुँ, सीधा लाइक मुंह पे, वैसे ही आप क्यों मारते हो? हुँ। मारना नहीं चाहिए मुंह पे। कहीं पे भी नहीं मारना चाहिए लेकिन चलो। हाँ, सही भी है, बट You don't beat me up at all, I think. आई मीन हाँ, Just become a better teacher. बट हाँ, द वर्स्ट थिंग आई सॉ, आई स्टिल थिंक अबाउट इट समटाइम्स। 2 भाई थे, हुँ, एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। हुँ, तो उसने, छोटा भाई बीमार था, लेकिन उसकी बारी आ गई मार खाने की, बिकॉज़ ही डिडन्ट डू एनी समथिंग, हुँ। या कोई काम नहीं किया था उसने, व्हिच इज़ आल्सो अ रिडिकुलस रीज़न टू बीट समवन अप। Sure. बट वो बहुत मारता था टीचर। हुँ। तो उसके भाई ने कहा कि ये मेरा भाई बीमार है, आप मुझे मार लें। Oh God. उसने दोनों को मारा। एंड आई वाज़ लाइक, और यू सी व्हाट इट डज़ टू यू व्हेन यू आपके साथ ना भी हो रहा, आप देख रहे हो ना ये, Yeah, तो yeah. इट मेंटली फक्स यू अप। Absolutely, तो dude. इसलिए व्हेन समवन्स Absolutely. येलिंग और समवन्स शाउटिंग, आई गेट ट्रिगर्ड, Yeah, yeah. और मुझे लगता है कि मैं उधर ही आ गया वापस। आई फील हेल्पलेस अगेन। That's horrible, बट dude. व्हाई इज़ दिस सो सीरियस सडनली? Because I mean, it's a serious conversation, बट man. हाँ, अब्यूज़ इज़ बैड, It's horrible. और टीचर्स को मार देना चाहिए। जो मारते हैं बच्चों को। आई एम जस्ट सेइंग, Yeah, मैंने क्या yeah. लाइक, एक तो लॉ होना चाहिए इसके अगेंस्ट, और दूसरा अगर किसी कॉलेज में किसी लड़के को मार पड़ी है, और रिस्पेक्ट ही होती है ना, इन अ वियर्ड वे यू आर सपोज्ड टू रिस्पेक्ट दैट। आई डोंट रिस्पेक्ट दैट। Yeah, man. No, listen, the और reason why. हमारी सोसाइटी इस चीज़ को बहुत कहती है, ओ मार से ही तो बेहतर हो, नहीं वो आगे अपने बच्चों को मारेंगे ये और अपनी उनके बीवी लिए, को मारेंगे, हाँ, बीवी exactly, को मारेंगे। exactly. The reason why most men turn out, if anyone turns out to be abusive, if you trace their history, there's absolutely a high chance कि at some point they were abused in their यू childhood. लुक एट ऑल दोज़ सीरियल किलर्स अमेरिका वाले, उनका तो किसी का बचपन अच्छा नहीं था। नहीं, नहीं, of course, yeah, yeah. But मुझे जो चीज़ ज़्यादा बॉदर करती है ना उससे भी, इज़ ये ट्यूशन सेंटर खोल के बैठा है बंदा, मतलब इसके पास मल्टीपल लोग आ रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, और कोई नॉर्मल था वहाँ उस ट्यूशन सेंटर में कि वहाँ, आई विल टेल यू समथिंग फनी, नॉट फनी एट ऑल, हाँ। लेकिन जब मैं शुरू में गया ना, वहाँ मुझे आवाज़ आती थी जैसे वो कोई ना बैग अपना ज़मीन पे मार रहा है। Oh God, आई यूज्ड dude. टू हियर Oh दैट अ my लॉट, मुझे God. लगता है कोई बैग मार रहा है ज़मीन पे, ये आवाज़ क्या आ रही है? देन आई रियलाइज़ वो कमर पे चपेटें पड़ रही होती थी बच्चों की। एंड ओके, Dude, is this guy still around, man? ओह नो, This. इट्स नॉट जस्ट वन गाय, ये बहुत डिफरेंट लोग थे। वो तो बाद में आया था, जिसके भाई वाला इंसिडेंट, वो तो बाद में था। हाँ। ये और थे, ये प्रिंसिपल उस एकेडमी के, जो वो लोग भी ऐसे ही थे। दे थॉट मैं बच जाता, मैं लिटरली, मैं आई थिंक मैं ज़िंदगी में सबसे रिलीजियस उस टाइम था कि मैं बस दुरूद शरीफ पढ़ता रहता था कि मुझे मार ना पड़े बस। और ना, ये होता था बहुत दफ़ा कि
मैं बच जाता था, बाकी सबको पड़ती थी। नो, वो तो गोज़ या विदाउट अल्लाह! सेइंग, वो गोज़ विदाउट सेइंग दैट दुरूद शरीफ में बहुत ताकत है, लेकिन But डूड also like दैट मैं शुडन्ट चुप रहता हैपन था। द मैन। थिंग इज़ उनको लगता था एंड इट्स समथिंग फनी बिकॉज़ मेरे फादर एक दफ़ा गए उधर एंड दे वर लाइक आपका बेटा बहुत अच्छा है, बिल्कुल नहीं बोलता एंड माय फादर वाज़ लाइक इसे बोलना चाहिए क्या मतलब बिल्कुल नहीं बोलता? हुँ, एंड द रीज़न आई वाज़ द क्वाइट किड वाज़ बिकॉज़ मुझे डर लगता था बिकॉज़ यूजुअली टीचर्स गुस्सा निकालते थे अपना बच्चों से लाइक कोई ज़्यादा इवन कोई ओवर स्मार्ट भी है ना, कोई ज़्यादा आंसर्स सही दे रहा है, उसे ही मार पड़ती थी। आई रिमेंबर मैं एक टीचर था जो तब हम बहुत इस चीज़ को लाइटली लेते थे बट इट इट वाज़न्ट फनी वो डंडा लेकर आता था कि अगर फुल मार्क्स भी आए ना, क्यों आए फुल मार्क्स? और मैं एक दफ़ा ना 3-4 चीज़ें पहन के गया था अपने कपड़ों के नीचे। हुँ। लाइक आई वाज़ यहाँ पैड्स भी लगाए हुए थे मैंने और मैंने 2 स्वेटर्स पहनी थी उसने और 2 जैकेट्स पहनी थी। उसने 2 जैकेट्स उतरवाई मेरी बिकॉज़ डंडे पड़ने थे और वो मज़ाक-मज़ाक से मारता था लेकिन ज़ोर का मारता था। बट आई वाज़ द फैक्ट दैट मैं 2 पैंट्स पहनी हुई थी उस दिन दैट्स दैट्स अ लॉट और मैं मैन। और लाइक ये भी नहीं कि फेल हुआ था, हुँ। अच्छे मार्क्स थे। बट आई कल्चर था, एक कल्चर बन गया हुआ था। आई रिमेंबर ऐसा मेरे साथ होता था, बट माय माय डैड डिडन्ट प्ले दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये था कि इसको मारो, तो मुझे मारते थे, बट देन उसके बाद दे वुड आल्सो बी लाइक कि इफ यू गो होम एंड टेल योर डैड एंड योर मॉम, अ, तो फिर और मसले हो जाएँगे। दैट्स इवन वर्स ना। या अच्छा मेरे घर में ना नहीं ऐसा कोई सीन नहीं था कभी लाइक ज़्यादा डाँटा भी नहीं, हाथ हाँ। तो कभी नहीं। नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन और उनको अब मैं बताता हूँ ना, मैं कैजुअली बताता हूँ कॉलेज कैसा था। It upsets them probably, yeah. या देयर लाइक क्या मतलब ये होता था लाइक आप लोग और द रीज़न आई वाज़ ऑलवेज़ सो एंग्री एट माय पेरेंट्स एट एवरीवन वाज़ बिकॉज़ आई थॉट दे न्यू Mm. दैट these things are Well, happening। how could they not is the question that you ask yourself as a या child ना कि इनको कैसे नहीं बट पता लाइक है? सोसाइटी आपकी है ही ऐसी, हाँ। आपको कैसे नहीं पता कि इधर ये लाइक आप मेंटली टॉर्चर हुँ, हो रहे हो। हुँ, हुँ। बट या अच्छा अच्छे दिन थे। हाँ, आई ज़बरदस्त आई दिन थे। मीन नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट उसकी वजह से आई गॉट इनटू म्यूजिक एंड स्टफ हुँ। इट्स बिकॉज़ रैप सुनना ही तब किया कि आई वाज़ लाइक यार मर जाना चाहिए। Jeez, dude, अल्लाह रहम करे। व्हाट इज़ दिस लाइफ? या मैन। नहीं dude, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना यहाँ पे, बिकॉज़ अगेन वही जो आपको पैसे भी नहीं दे रहे थे। आई नो इट्स अ वियर्ड कंपैरिज़न टू ड्रॉ, बट देयर इज़ नो एटिकेट्स, देयर इज़ नो लिमिट्स, देयर इज़ आल्सो नो प्रीरेक्विजिट्स। आप किसको टीचर बना देते हो? कोई भी टीचर बन सकता है। एग्ज़ैक्टली। दिस गाय क्लियरली हैज़ इश्यूज़, राइट? क्लियरली ही हैज़ इश्यूज़, और आप उसको टीचर बनाओ, यू आर गोना लीव हिम अराउंड किड्स मैन? लाइक मैं ऐसे सोचता हूँ कभी-कभी कि इफ I ever had kids, man, and something like this happened, हाँ, तो करना चाहिए मतलब ना। फिर I'd be in द jail, थिंग द man. द थिंग इज़ किड्स शुड नो दैट देयर पेरेंट्स हैव देयर बैक और Yeah, समवन हैज़ देयर बैक। yeah, yeah, absolutely, how could, yeah, absolutely, यही man. तो नहीं पता होता था। Bro, यही तो नहीं बिल्कुल नहीं पता था। पता आपको था। लगता था कि कोई भी नहीं है आपके साथ। Bro, but that's what these people make you feel ना। वही मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि it's not like they wouldn't hit me. They hit me just enough कि bruise मुँह पे ना आए. This is the other वो thing. मेरे Like, फ्रेंड के तो कान पे यहाँ निशान भी पड़ गया था एंड दैट्स व्हेन हिज फादर केम एंड ही वाज़ लाइक कि क्या सीन है? दोबारा दोबारा मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाना। हाँ। तो हम खुश हुए थे कि फाइनली किसी के फादर Bro. वो मेरा ये था कि दे वुडंट हिट मी अराउंड द फेस, बिकॉज़ एंड हैंड्स पे भी नहीं ना, बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह घर का सीन अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है। बट दे हिट मी ऑन द बैक एंड द बट एंड टाँगों पे। ब्रो बट टाँगों पे पे, तो मारना वैसे ही वो किंकीनेस है ना ब्रो लाइक आई दे आई वर गेस बीइंग किंकी। आई गेस ब्रदर यू हैव अ नाइस बट। yeah, sure, okay, all right, but I didn't appreciate any of it. None of it I आई मीन appreciated. वो लाइक अजीब से टीचर्स मार रहे हैं तो आपको अच्छा भी नहीं लगता। Bro, क्या हो अच्छे गया? टीचर्स में प्यारी-प्यारी टीचर्स होते हैं तो बंदा कहता है ओके ठीक है। Shah, what the fuck, dude? What the shit? नहीं अच्छा लाइक मेरी एक टीचर थी जो मुँह स्कूल की बहुत मुँह पे मारती थी चपेड़े पड़ाक पड़ाक। हुँ। मैं बच गया था हमेशा cause for some reason it also used to annoy them कि वो ना कहते थे अच्छा इसने टेस्ट अच्छा नहीं दिया उर्दू का तो इसे 3rd ग्रेड में बिठा दो हुँ। और मैं बस खुशी-खुशी चला था, मेरे मुँह पे स्माइल होता था एंड देयर वाज़ दिस अदर टीचर जो ना इंग्लिश डिपार्टमेंट के सॉर्ट ऑफ हेड थे, क्या थे?
बट ही वाज ऑलवेज ऑन माय साइड। वो कहते हैं ये बच्चा क्रिएटिव है, आप लोग समझते नहीं ऐसे। और बिकॉज़ ही वाज द सीनियर टीचर, कोई आगे कुछ बोलता नहीं था, एंड Hmm. दैट यूज्ड टू आल्सो पिस टीचर्स ऑफ कि ये क्यों साइड पे है उस स्टूडेंट की। Bro, on that note, two things that would piss people teachers off when it came to like just me. Ek, my father was a prominent member of society, right? तो कभी कोई मुझे इस बात पे मार पड़ती थी, हाँ तुम तो रईस हो ना. ओह I'm हाँ, like, ये भी dude, होता come था। on, man. ये भी होता, डीएचए के रहने वाला है ना इसलिए ऐसा है। हाँ, मैं तो नहीं पिक किया घर. मैं तो नहीं बच्चों पे हाथ उठाता। हुँ। Allah Reham करे. But the other thing, rice and then Sindhi. That's the other thing that used to get it रियली? for. हाँ, कैसे पता है मुझे किस चीज़ का सिंधी फ़ायदा ऐसे ही होता होते था? हैं. हाँ. किस चीज़ का मैंने फ़ायदा अपने थीसिस में उठाया भी था। थीसिस इंस्ट्रक्टर अब मर गया तो कोई नहीं, अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो आमीन, अब मैं बता, आमीन. 'cause मेरे नाम में शाह आता है। Yeah. दे यूज्ड टू थिंक कि मैं शिया हूँ। और काफ़ी टीचर्स ना, 'cause वो शिया थे, मेरी अटेंडेंस लग रही होती थी कॉलेज में। मेरे माँ मुझे कभी कोई टेस्ट भी नहीं देना पड़ता था। और लाइक थीसिस में आई रिमेंबर माय इंस्ट्रक्टर वाज दिस ओल्ड मैन जिससे बहुत डरते थे लोग। और मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने कहा, जो शिया था, उसने कहा काली शलवार कमीज पहन के चला जाए। कह नहीं था ना मोहम्मद शाह है। What और is यही going हुआ, on here, उसने dude? मेरे ज़्यादा चीज़ें देखी ही नहीं, उसने बस लाइक ग्रेड लगा दिया उसने। मैं अपने अब्बू को मजाक मजाक बताया था, मैंने कहा बाबा बोल रहे ये थे क्या? देखो, सुन्नी जब ज़्यादा है तो एक दूसरे की हेल्प नहीं करते उस तरह। हुँ, हुँ. लेकिन जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कर देते हैं एक दूसरे की हेल्प। Oh no, absolutely. This is an actual thing, man. Like हाँ, I think ये मैंने पहले भी बात की हुई है. जैसे I am a fan of how closely knit the Aga Khani community is. I'm not speaking about their belief, right? I'm not speaking about any of those things. वो तो उनका अपना मसला है. But the way they take care of each other, I'm like यार ऐसे ही होना चाहिए सबको यार. I wish all of us took care of each other like that, but we don't, right? Not the Sunnis, not the Sindhis. अभी Sindhis भी बहुत ज़्यादा है. Not the Punjabis. They don't. No one takes care of themselves like पंजाबीज़ that. तब ख़्याल रखते हैं जब वो आई थिंक किसी और मुल्क में हो, यस, तब ख़्याल यस, रखते तब पता है तब पाकिस्तानी, इंडियन दोनों हैं। पंजाबी मिल मिल जाते हैं बिकॉज़ वी आर ऑल द सेम पीपल आई मैन. थिंक पंजाबी अभी भी जो इंडिया में भी है ना, दे आर प्रीटी मच ओके विद पाकिस्तान। आर यू स्पीकिंग अबाउट पंजाबीज़ और द सिख कम्युनिटी? पंजाबीज़ आई थिंक सिख कम्युनिटी वैसे है हाँ, सही आई थिंक, हाँ. लेकिन उनका थोड़ा और सीन है, 'cause वो हमारे एक्टर्स भी अपनी मूवीज़ में ले आते हैं। तो या, उधर या, वो श्योर. सीन नहीं, उधर हाँ. बैन नहीं, उधर सिनेमाज़ नहीं चलते। ब्रो उधर जो है ना बस कम्पीट करते हैं और जो है दे जस्ट मेक रियली रियली वो क्या मेक रियली रियली डोप शिट इज़ व्हाट दे डू. आई मीन वहाँ की कॉमेडी देखो, वहाँ का म्यूज़िक देखो, वहाँ का आप मूवीज़ तो देख ही लो. टंग 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 टंग। ये कौन-सा वाला है वो ये रंग दे म्यूज़िक, बसंती? हाँ, रंग दे बसंती। दैट वाज़ फैंटास्टिक. ए आर रहमान? हुँ, हुँ। एआर अभी उसकी शादी हुई रिसेंटली। नॉट नॉट द कुकिंग कियोस्क एआर। बे यार, अच्छा मेरी बात सुनो. या यू शुड हैव यासिर पूरी हियर। Dude, invitations open for all of them. वो आते नहीं है. कराची, हाँ, कराची पता नहीं कब आता है वो। वही. Yeah, it's not from me. I think a lot of people get upset sometimes with me कि यार आप फलाना बंदे को नहीं बुलाते. इनविटेशन ओपन है भाई, इनविटेशन ओपन है. हाँ, उनको लाइक सनी खान दुरानी। उनको मैंने नहीं बुलाया कभी. सही बात है. वो इस्लामाबाद, लाइक वही ही शुड बी हियर आई थिंक। All right, I'll invite him. Sunny Kandurani, please, if you could. आई लाइक सनी खान, आई थिंक मोजी भी, बिकॉज़ आई फील लाइक इतने ज़्यादा रैपर्स हैं एंड सबको वो नहीं मिलता। I wonder why, dude. I mean, क्यों नहीं मिलता? आई They all have थिंक good music. they all have good music. I think the thing is, youngsters were very consistent. वो Bro, तब बना रहे far, थे हाँ, हाँ, जब कोई नहीं, जब लोग रुक गए थे ना, तब वो बस फेंक रहे थे हाँ, म्यूजिक। हाँ. और अच्छा है, दे पेव्ड द वे। लेकिन अब बाकियों को भी But I थोड़ा think with the youngsters, there's a few things that I appreciate deeply. A, their message I think is very mature now. Them, it's an evolved message, and B, again, their consistency. I wish I was as consistent. I think most people wish they were as consistent as them. अफसाने में लिखता हूँ, क्यों दुनिया को दिखता नहीं हूँ. मैं दुनिया को दिखता भी हूँ। आप दिखते हैं दुनिया को. अफसाने 2। But anyway, but I was watching Joke's podcast with you, और वो कह रहा था उसने मैट्रिक किया और बीकॉम किया और एमबीए किया। लाइक ये तो मैंने भी की। Yeah, As I say, bro, it's just hard work with him. Also, what I appreciate truly about him is how little time he had for nonsense. Like for instance, I was like, some artists they just make it for themselves. He's like, no. I'm like, what do you? He's like, no. that's true. I mean, you make something you like,
but in the end you want to show it to people. Otherwise, don't And publish it. That's his thing. also you're like मेरी तरह के और भी लोग हैं who would like this stuff. Sure. Even if they don't like it, I think it's not your job to worry about whether people are going to like it or not. But it finds an audience. Yeah, man. I think if you're going to make it, you have to release it into the world. I think that's how it is. Like sometimes there's a complete opposite reaction to things. I made the song Jahaz and I thought people will hate it. उससे बहुत hate आएगा कि बस गालियाँ आएंगी कि ये बनाया, ये क्यों बनाया. But it was the complete opposite. Yeah, I think And that then I made sorry, I'm getting you. Then I made recently Bulletproof Balls, which I thought is one of the best What ones. is wrong with you? I thought it's one of the best ones. उससे कुछ भी नहीं. And I think the reason because of that happened is मैं बहुत consistently रख रहा था और किसी को वो उस तरह टाइम नहीं दिया because usually मैं एक चीज़ बनाता मैं उसे बहुत टाइम देता था. I was like special है ये. वो चीज़ खत्म हो गई थी. I was like बस मैं निकालूँ इन वीडियोस को अपने because मेरे पास बस पड़ी हुई थी 4 वीडियोस. एक तो डिलीट कर दी मैंने because I just never liked it. वैसे भी अपलोड करते ही मैं बहुत बार सोचता था कि अब मैं अच्छा मेरा एक फ्रेंड है हनान और मैंने उससे पूछा Abdul Hanan? No. The better Hanan. No, just kidding. I love Abdul Hanan. All right. But my friend Hanan is obviously, he's my friend, so he's better. Shout out I to think Hanan. I think Abdul Hanan understands. Yeah, obviously. Yeah, He'd do the same to me. But yeah, Hanan Imtiaz. Yeah. Shout out to Hanan Imtiaz. But yeah, उससे मैं पूछता हूँ यूजली कि यार ये अच्छा है या नहीं. वो कहता है हाँ अच्छा है. बाद में ना जब मैंने कहा ना मैं डिलीट कर दिया अच्छा ही था. हाँ यार वो मुझे भी उतना अच्छा है. क्या पक्की मैं तेरे से पूछता इसलिए हूँ. when I'm asking someone this much is when I'm second guessing it, and Yeah. when I'm second guessing it, that means it's not good. Yeah, I don't That's know. how I see it. But I don't know if you want to see it like that because again, you have to I understand. like to see it that. All right, well, you have to understand that people take value from it according to their situation, na. तो कोई गाने होंगे जो maybe you'll be like इसमें क्या value है, but you don't know ना because comedy is also value, laughter is value, all of it is value. तो आपको ना इस तरीके से Value meal. बिल्कुल. Okay, anyway. हाँ बिल्कुल. तो जो है वो but you have to understand कि people draw whatever value they will and sometimes certain things won't do well. Like for instance, the past 6 podcasts उसमें से 4 ने जो हैं they've done okay, alhamdulillah. But because the guests were famous, but जो आखिरी 2 आई हैं they haven't even crossed 1,000. अब इसका मतलब Also, sorry, I think because I thought about it because I saw oh इतनी जल्दी. Yeah. I think it's also because of that cooking chaos when they got consistent उनके views जो है drop हो गए थे. अच्छा. Opposite हुआ था. और अब वो दोबारा उनका वॉच टाइम वगैरह सही हो गया जब वो एक मंथ में वो एक रख रहे हैं. Well, I think that there's a fine balance to be had. No? I understand that people want to make series now. People don't want to make a video or 2 videos. They want to make weeks, months of content, right? I understand that. I really do. But उस सब के साथ you have to understand that there is a balance. वही जो आपने बोला कि they need to be given minimum allowed attention. आपके बच्चे हैं ना सबको आप उतना ही प्यार दो फिर. मतलब एक minimum amount of प्यार तो दो. उतना दे नहीं सको वो तो ठीक है. नहीं. No, please stop, dude. What is wrong with you? Anyway. Serious conversation हो रही है यहाँ पे, bro. Do you think you said that the hurt kind of propelled you into music? You think all art comes from a dark place? You feel like that because you've met now some great artists from Pakistan, Fawad Khan, Sanam, Asim Abbasi himself. I know Asim Abbasi has it does come from hurt. If you're talking about Asim Abbasi, because he was talking about losing his parents and stuff. That's when he wrote this one at least. Yeah. But yeah, sometimes I mean it does something because when I was going through when I was doing BCom and I was really depressed, that's when I started listening to rap. पहले मैं इतना music सुनता नहीं था. But here's the thing, no, man. You have to understand. You weren't depressed. It was just a really shitty situation. You know what I mean? It was like years of that situation. But that's what I'm saying. No, you can't be like कि मेरे साथ कोई मसला था. नहीं, आपकी situation बहुत shit थी. You know? The thing is, I thought it was something wrong with me. That's what I'm saying. It wasn't. अब पता लगता है ना तब तो like I there was a dead end. Basically, I didn't see कि like MBA जब end करा था, I was making this video
जो फेक ट्रेलर बनाना था मैंने, एंड दैट वाज लाइक आई थॉट ऑफ इट कि ये लास्ट ट्राई है मेरी, द ओनली होप आई हैव। अगर ये नहीं होता, आई डोंट नो आगे क्या है लाइफ में। एंड व्हेन आई मेड दैट थिंग, एक अजीब सा डर आ गया, बिकॉज आई वाज सो ऑब्सेस्ड विद इट फॉर इयर्स कि मैंने ये बनानी है वीडियो, कि मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा इसके बाद, बिकॉज अल्लाह रहम करे इसके ब्रो. because मुझे लगता है आगे क्या है, करूँगा क्या, कुछ पता ही नहीं। Hmm. बट या बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट अ जॉब एंड स्टफ लाइक दैट। तो बस क्या मैं लाइक मुझे डर था एमबीए मार्केटिंग के बाद मैं जॉब क्या करूँगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, लाइक मुझसे नहीं होगी। MBA मार्केटिंग पास नहीं की क्या आपने? मैंने कर लिया था, लेकिन मुझे नहीं कुछ समझ आ रही थी कि क्या करना है, बिकॉज आई डेंट ऑल्सो वांट टू डू दैट, आई डेंट वांट टू बी दिस डिप्रेस्ड सैड गाय जो करना नहीं चाहता था ये, और बस फैमिली के लिए कर लिया। एंड आई एम स्टिल ग्लैड आई डिड इट बिकॉज ऑफ माई फैमिली, बिकॉज अब उनको कोई मसला नहीं है मैं जो मर्जी करूँ, Hmm. दे सपोर्ट मी। Sure. Okay. और मुझे डर भी लगता था कि घर वाले निकाल देंगे अगर उनको पता लगा कि मुझे म्यूज़िक इस तरह से शौक है, बिकॉज मैं अपने फादर को बताता नहीं था, बहुत डर लगता था, बट टर्न्स आउट ही इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट सपोर्टर्स। ब्रो मैं बता रहा हूँ ना, I've quoted this, मतलब quoted क्या पॉडकास्ट में, काफ़ी सारे पॉडकास्ट पे मैं ये बोल चुका हूँ. The biggest and the best thing you can say to your kids or teach your kids or give your kids is love. You have to give them confidence. They have to believe. You have to make them believe that you're on their side. It doesn't matter if you don't like them, man. Yeah. It doesn't matter if they do something stupid sometimes, but they have to believe. They need this belief in the fact कि नहीं, ये मेरे बाबा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे साथ है. I don't know हम कहाँ गुम हो जाते हैं. पता है क्या, आई थिंक कम्युनिकेशन इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज मैं बताता ही था मुझे चाहिए क्या है, बिकॉज ऑल्सो द ट्रूथ इज आई डोंट थिंक आई न्यू व्हाट आई रियली वांटेड। आई न्यू कि अच्छा, बिकॉज दिस होल थिंग दैट आई एम डूइंग नाउ मुझे लगता था इम्पॉसिबल है, Bro, लाइक it didn't exist 2 years ago, this thing. लाइक इट वाज लाइक कि दूसरी दुनिया है ये, लाइक टू नो दीज पीपल, टू हैंग आउट विद दीज पीपल, मैं ये सारे ओ लेवल्स वाले कर सकते हैं। लाइक मैं एक्चुअल में सोचा था ये ओ लेवल्स वालों की गेम है, उनका शुरू से बस सीन ऑन होता है, और मैं तो मैट्रिक किया, मैं तो क्या है, मैं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हूँ, लेकिन बिफोर गैंग्स Before gangs of जो आई नहीं इस यूनिवर्स में, गैंग्स ऑफ बनी नहीं थी। Oh. No, dude, I still think, man, I don't think kids are supposed to know what they want. I don't think kids are supposed to figure it out at a young age. But I think irrespective, if you want, by the way, it doesn't even matter what you want the kid to be or the kid to do. I think irrespective of any of those things, you have to tell them that you love them. या They have to know this, you know? And I think हमारे माशरे में I don't know हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं. द थिंग इज लोगों को समझ नहीं आती कि इफ समवन सेज समथिंग अबाउट द पेरेंट्स, कि उनके पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स अच्छे नहीं होते अनफॉर्चुनेटली, No, dude. नहीं होते। No. मैंने No. कुछ लोग जानता हूँ उनके पेरेंट्स आर लाइक Yeah, yeah. नॉट गुड पीपल एट No, they're ऑल, और awful, yeah. मुझे, और वो बहुत अच्छे हैं, खुद लाइक बहुत अच्छे हैं, खुद हाँ. बहुत अच्छे हैं, हुँ. और वो इसलिए है कि बिकॉज वो उन्हें कि उनको लगता है अच्छा ये नहीं होना चाहिए किसी के साथ। और ये चीज़ हमारे, आई थिंक आई फील लाइक हमारी जो सोसाइटी है ये चीज़ समझती नहीं, उनको लगता है कि सारे नहीं पेरेंट्स सारे अच्छे हैं। पर वो उस तरफ ज़्यादा फ़ोकस करते हैं ना कि माँ-बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए. नहीं, तो इट्स नॉट बेइज़्ज़ती. ये वही सीन था कि आपका जो टीचर्स होते हैं ये रूहानी माँ-बाप होते हैं, तो आपको जो मर्ज़ी कर दें आपके साथ, हाँ. आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ऐसे नहीं हो सकता, सॉरी। ब्रो पहली बात तो यू हैव टू. माँ-बाप फिर भी चलो ठीक है, माँ-बाप हैं आपके, हाँ. लेकिन जो हाँ. ऐसे नहीं कर सकते आप, पहली बात. दूसरी बात, बेइज़्ज़ती भी, दिस इज़ नॉट बेइज़्ज़ती. इफ आई से, देखो देयर इज़ अ लाइन एंड आई एम ट्राइंग टू बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि बच्चे भी आजकल बहुत बदतमीज़ी करते थे. हमेशा हाँ, ही करते थे, राइट? लेकिन अब बहुत कर देते हैं. But I'm just saying you're really causing a lot of damage. The माँ-बाप are really causing a lot of damage, and that's because they don't know how to be parents yet. I think the problem is आई people are not ready to be आई parents. थिंक द थिंग इज़ एक और भी चीज़ होती है, हम उनको इंसान नहीं समझते, Sure, sure. We put them समटाइम्स on a वी pedestal, yeah, या yeah. व्हिच इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम। Of course, it's a problem. But I think पेडेस्टल प्रॉब्लम है असल। असल में pedestal fan problem है. लेकिन नहीं, उस सब से I think beyond all of that, above all of that, I do feel you should not have children until you're ready to have children, right? Everything only works if you realize how much of a responsibility this is. बट आर Your यू life's एवर about to रेडी? change. अब मुल्क के हालात देखो, आर यू एवर गोना बी रेडी? Bro, there's people that are young. I'm 30 years old. There's people that are 26 that are ready. And बस बच्चा करना है। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे.
ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. But they're just ready, and alhamdulillah they've had a child, and Allah उनको हयाती दे और Alhamdulillah, खुश रखे mashallah, इंशाल्लाह, mashallah. alhamdulillah, right? And I think it's fantastic. I really do. But it's not like, sometimes you're just not ready, man. Sometimes you're just not ready, and you have to understand. And देखो, if you're at all confused about the fact that who is a priority after your child is born, you're not ready. That's a litmus test. Because once your child is born, na, your whole life shifts according to the हाँ, child. नहीं तो नहीं करो, नहीं तो नहीं करो. It's okay. हाँ. It's all right. नहीं, हाँ, बात तो सही है. बस इतनी सी बात है. No, stop, dude. Sorry. You're terrifying me at this point. What बच kind, के काजी, बच के. what kind of work would you hope to get? So now you're obviously alhamdulillah getting content. अभी तक acting और gig नहीं आई है. Act, नहीं यार, they wanted me to audition for something अभी recently. It was the worst. It was just a bad audition. और मैंने उनको भेज के apologize, इनको voice note भेजा कि I'm sorry. Bro, come on. But what I'm saying is, what kind of work would you like to get into Yeah, the future? I would like to, if I for acting, I Yeah. think सबका ख्वाब ये होता है कि to get the projects that they would watch. Mm-hmm. I mean, I did the Asim Abbasi thing because I knew about Asim Abbasi. I was already a fan of his work. So it was like, okay, say yeah, I'll do it because I'm gonna watch it. अगर कोई मुझे कहता है एक soap है जिसके सास बहू वाली चीज़ है जो मैं बिल्कुल Please stop. Yeah. Please stop, dude. वही नहीं देखूंगा. हाँ. लाइक वो थोड़ा सोल सकिंग भी होता है ना कि आपको पैसे तो मिल रहे हैं बट इट्स ऑल्सो लाइक आपको अभी you want to enjoy it also. I think people view it as a necessary test But before they can also I do have the to be projects. good. Yeah, do the projects that, no, but people view it as a necessary test before they can get the projects If that I they want. suck, but if I'm a terrible actor, I'll just jump off a building. No, dude, you can't say that, man. Allah रहम करे. It's not funny. कराची की हवा मुझे उड़ा देगी. Bro, 'cause that's not funny. बहुत तेज पहली हवा. बात तो इतनी खुश फहमी में ना रहो, लेकिन दूसरी बात, that's not funny, dude. It's not Because funny. sometimes it's just embarrassing. What's embarrassing? So imagine like it has Fawad Khan and Alia Bhatt's watching it. She's like, "ये कौन बार बार है?" She won't say that, dude. She won't say that. And Then I'll tell you what she's saying. she won't. Yeah, She won't say that. She won't. She won't say that. But what I'm saying is, you have to give yourself permission to suck. Otherwise, you won't be good. Otherwise, you. Oh God. Oh, come on, man. When Gotham is ashes, you have my permission to suck. No, not like that. But that's what I'm saying. Nah? I mean, do you imagine Fawad Khan was always good, or if Sanam was always good? They Yeah. weren't. That's what you're thinking? That's what's going on? पैदा होते ही अच्छे से. They were just good. This is like Habisha. मैं बस अपनी नाक सही करा लूँ ना, बस गेम ओवर सबके लिए. Bro, Asim Abbasi आपको pick ही नहीं करता. That's true. That's what I think. And then people love my nose. But like I was talking to someone and I said to her कि यार लोग मेरी नाक ना एड्रियन ब्रोडी से कंपेयर करते हैं. And she goes like, नहीं, एड्रियन ब्रोडी is hot. यार ये जो लोग होते हैं बड़े बदतमीज होते हैं. ये जो लोग होते हैं ना, ये बड़े बदतमीज होते हैं. Serious हो गया. उसने कहा she's a friend of mine. And Apparently not. Apparently she's not a friend of yours. I think friends are supposed to be honest. No, I this need is to not join a honesty. gym. This is not honesty. He's also Jewish. Who is Adrian Brody? Yeah. Adrian Brody is really good looking. लेकिन उससे ज़्यादा, you're also really good looking, माशाल्लाह से. That, yes, that. Okay, all right. Yeah. My Jewish brothers. Yeah, okay, अच्छा No, मेरे that's पास. not. And some No, samosa. that's not it. Adrian Brody, have you watched Peaky Blinders? He's drinking Red Bull. That's fine, yeah. Have you watched Peaky Blinders? Come on, dude, focus. No, I tried. मैं एपिसोड 1 देखी बट आई वाजंट इन द मूड. मैंने ये सोचा कि इस शो को मेरी फुल रिस्पेक्ट चाहिए. अभी मैं दे नहीं सकता. मैं बाद में दूंगा. Bro, आप शायद थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं. Is that, do you get that sense? That you think a little too much? I think. I'm glad you think that. I do think that. But no, when I was working in Misbah na, mostly, he's like, शायद तू सोचा ना कर इतना, तू बस कर दिया कर. And I think Misbah does know कि मैं उससे पहले जब मैं रिकॉर्ड करता used to be like 20 takes होती थी मेरे एक आधे वर्स की. पूरा वर्स भी नहीं होता था usually. And because I was like, नहीं ये सही नहीं, इसमें ये मसला है, ये मसला है. I think about the problems that I have.
which I are I think there's a balance there. I don't think you should not have that at all. Matlab, you do want to make good things. हाँ You know, you want to have progress and evolution in your work. But I do think that you need to also trust yourself a little bit. You तो सही है ना? Yeah. sorry मतलब so, मेरे बाकायदा इम्तिहान हो रहा है अभी bro. I mean, you're my अब नहीं friend. कर अब You're नहीं my friend. अब नहीं करूँगा You're my friend. इसलिए तो कोई नहीं और नहीं कर नहीं सकता नहीं है नहीं ये? नहीं, मेरी कोई बात और सुनो. ये माइक मुंह में डाल सकता नहीं है नहीं bro. Please. I mean, there's people I don't like. उनके साथ मैंने podcast ज़्यादा आराम से किए. name them Of course, I won't name them. You can't name people, but I'm just saying there's people that rub me the wrong way. And how did they rub you what is this wrong way of rubbing Kazi Akbar it's the opposite of the right way of rubbing Kazi what is Akbar. the right way tell me I don't want to tell you that that's inappropriate. बाद में बताना नहीं मैं नहीं बता रहा आपको लेकिन आप किचन में बताना bro please. यार सॉरी मैं कराची आके ना कुछ हो जाता है मुझे कराची की हवा लग जाती है Why are you in Karachi? आई मीन कराची कज यार बस दिल कह रहा था एक्चुअल मैं सिर्फ खाने आया मैं सोशलाइज करने आया हूँ कराची एंड आई थॉट कि शायद कोई मुझे एक इंपॉर्टेंट इंसान मिल जाए कि ओ शाह तू कराची में ये प्रोजेक्ट अभी मैं शूट कर रहा हूँ ये ले 10 करोड़ रुपया ऐसे नहीं होता लेकिन ख्वाब 10 करोड़ yeah. लेकिन नहीं मुझे अभी तक खुशहाल नहीं का परिचय मिले जो कि अच्छे बहुत अच्छे लोग हैं They're nice people. और Yeah. कौन मिला मुझे बहुत ताहाजी मिला Taji Mila? Where did you see him? I met him at this wedding and this party and turns out Tahaji is a big fan of I Am the Shah. Yeah. With- Yeah. with- Tahaji is well versed in the culture. Tahaji, you should know that he's Tahaji. Yeah, he doesn't know that he's Tahaji. He doesn't know he's Yeah, Tahaji. he sometimes forgets. He's too humble. Yeah. He forgets sometimes. Good guy. Super nice. Super nice. I knew him before he was Tahaji. You know Taha. Gurwara. Oh yeah, that's his full name. Yeah. Super nice. Super nice guy. And yeah, sometimes people forget who they are. Sure. I agree मेरे with that. मन में Tahaji. Yeah. Anyway, आपके मन में ताहाजी है. नहीं Okay. फिर? वो कोई और था. Right. अब मैं वो नहीं हूँ Right. जो मैं 2 सेकंड पहले था. Okay, bro. Anyway, so the thing is, yes, abhi the whole goal, not the whole goal, it's not a goal. Actually, maybe following तो वही है. I think the last time we met उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा होगा बस थोड़ा सा मतलब मैंने इम्प्रूव इस सेंस में किया कि मैं ब्रांड्स मिल रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं वैसे मैंने इम्प्रूव नहीं किया मैं अभी तक स्क्वायर वीडियोस बना रहा हूँ मैं वर्टिकल वीडियोस नहीं बना रहा बिकॉज आई वाज टू अटैच टू दैट Well, I disagree, bro. You've improved in your अब मैं content. वो कॉक एंड बुल वाला गाना जब बनाऊंगा ना जब भी बनाऊंगा इट बी वर्टिकल Cock and bull क्या? कॉक एंड बुल इज दिस shawarma place they have everything and it tastes the same everything tastes the same आप वहाँ से steak order करोगे it'll be the same it'll be like shawarma के तेल में ही बना हुआ Mm. Okay. All right. so it's yeah Lahore आओ तो you'll taste some Bro, cock and bull okay. I would come to Lahore for the culture, though Come. I'm not a fan of the food, man. I'll be honest with you. what's कल्चर क्या है लाहौर में तो फिर मैं नहीं आऊँ ना मैं क्यों आ आ रहा जाओ हूँ ना खाना भी है फिर? खाना नहीं खाना मुझे. मैं हूँ All right. See, that's culture. हाँ, I'm the culture You're the culture. That's fine. That's fine. I'm not a fan of just going somewhere just for the food. You go there, it has good hey food. I came to Karachi na For the food. mainly I want to try these things Irfan ने जो की reels वाली Yeah, Irfan bhai, क्या कर? What are you doing here? but actual में then you tell me कि बहुत ड्रोनी जगह वहाँ ना अकेले ना चले Bro, जाना ये मतलब वो इरफान भाई खुद ने किस तरीके से शूट्स किए मतलब मुझे पता है गार्ड भी साथ था हाँ गार्ड तो था लेकिन सुपर डेंजरस मैन एंड आल्सो पे ना बन कबाब किधर है मैंने बन कबाब अभी तक मैंने बन कबाब नहीं खाया कराची जब से आया मैं अभी जाऊँगा मैंने वो नर्सरी बन कबाब चपली कबाब खाना है मैंने सॉरी नो नो मैंने मिस्टर बर्गर फिर से जाना है यार कराची मैं वहीद फ्राई कबाब गया हूँ पहले दिन आते ही आई लव दैट पेट ख़राब नहीं किया मेरा इस दफ़ा उसने और देयर वाज आल्सो दिस कुल्फ़ी वाला जिसके ऑपोजिट ही 69 से था वो 1969 से था वो और इसका नाम मैं भूल गया हूँ बड़ा अच्छा था यार मैंने बिरयानी नहीं खाई कराची की लास्ट टाइम आया था मुझे किसी की आमना बिरयानी खा ली थी और अपेरेंटली वो अच्छी नहीं थी बिकॉज मैं तब बड़ा जज नहीं हूँ बिरयानी का मुझे तो लाहौर में बेस्ट बिरयानी बनती है इवन तो कराची की ज़्यादा अच्छी होगी लेकिन अभी तक मैंने खाई नहीं वो ऑब्जेक्टिवली कराची का खाना बेहतर है लाहौर से इट्स मोर फ्लेवर हाँ हाँ दिस इज नॉट बट वहाँ का शायद साफ ज़्यादा है आई थिंक क्योंकि वहाँ पे पानी ज़्यादा अच्छा है लाहौर में ये क्या सीन है कराची का मैं बोतल से अपना सर धोता हूँ
Really? कज़ मुझे डराया हुआ है बहुत, ये खुशहाल ने मुझे बहुत डराया हुआ है कि कज़ वो तो एक्टर है, तो मैं इसकी बात पे यकीन करता हूँ व्हेन इट कम्स टू दीज़ थिंग्स कि कि क्या चीज़ अच्छी है स्किन और बालों के लिए, क्या चीज़ नहीं है। अच्छा, तो तो आप जो है वो तो नेस्ले कह पानी से नहा हाँ, रहे हैं? हाँ। दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रिविलेज मैन, I'll be honest with you. ये बाकी गरीब लोग ये क्या जाने। अल्लाह तौबा। यार लेकिन हाँ, यहाँ आते हुए ना मैंने सारा कराची देखता हुआ है। Yeah, but I'm in Malir can't no, dude. I told you this. I told you this. I said this to you. I forgot ना। How I do you thought forget where you're going? You I get into a car, you forget नहीं, where you're नहीं, going? नहीं, वो तो मुझे याद आ गया था। मुझे ये अनीका ने बताया कि ही इज़ इन मलेर कैंट। आई वाज़ लाइक व्हाट, ही इज़ नॉट इन डीएचए समवेयर जो पहले था जहाँ? हाँ, नहीं. 'Cause you moved, आई थॉट कहीं पास ही मूव हो गए। Nah, bro, I moved to Hyderabad and then या I यू came मूव back. देयर, फिर वो गायब भी हो गए थे। फिर Yeah. पॉडकास्ट भी छोड़ दी थी। Podcast तो ऑफ हो गई थी ना? यूट्यूब पे इतना बड़ा होल वो रह गया था एक, अच्छा. क्या कहेगा काज़ी होल। And okay, all right. Well, Shah, this has been fun. या हमें कोई 2 घंटे तो हो गए। हे, Bro, yo, stop touching me, man. यस, यू आर टचिंग मी। Yeah, dude, I'm all the way over here. I'm taller than you. You can't be like आई that. माय लेग्स आर टॉलर देन योर्स। How does one measure that? मैं बचपन में लटकता बहुत था टाँगों से। Well, this has been fun. Thank you for doing this, and can't wait to see what else you do in the future, I hope inshallah. the web series, the Barzakh, comes out soon. अब तो announce हो गई है ना, bro. Yeah, announced, so yeah, but apparently they, I don't know if I should say it, but I'm gonna fucking say No, it. don't say it. Don't I'm say gonna it. say it. Fuck it. अब तो contract भी नहीं है, bro. Okay, all right. But नहीं, apparently they want a wider distribution because they think it's a more artsy and important that पहले Z5 में बस था ना। I don't know अब अकेला Z5 पे आता है कि नहीं। I don't know that. Oh, that's exciting, dude. That's exciting. It Yeah, could be, yeah, yeah. yeah. आज है बस आएगा इंशाल्लाह. यार वो जिंदगी तमाशा के साथ जो हुआ, bro. YouTube पे आ That गई। was हाँ, unfortunate. ज़्यादती That थी। was sad. It was a little sad. मैं देखी नहीं अभी तक। मैंने आधी देखी. It's really harrowing. Also, it's quite hard. Like यार it's difficult. मैं ना देखूँगा, साथ में कॉमेडी म्यूज़िक चला लूँगा पीछे to distract myself, to not feel नहीं मज़ाक कर रहा। मैं सिनेमा सही तरह देखता हूँ Okay. फ़ोन पे। All right. Same. Unfortunately. नहीं, नहीं काज़ी अकबर नहीं, हम फ़ोन पे मूवीज़ नहीं देखते। Bro, मैं सारी movies phone पे देखता हूँ. यार मैं टीवी ले आता हूँ। ओके, Okay. All right. Well, this has been fun, bro. यस, This has been fun. अल्लाह रहम करेगा। Allah रहम करेगा. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम।